Hello children, good morning. Today I am going to start the lesson 3 for the student of class 3, and the name of the lesson soil science. At first we will discuss our topic. First, today we will learn about soil and their types, layers of soil, composition of soil, formation of soil, uses of soil. It means soil and their types. How many types of soil? soil कितने प्रकार के होते हैं? layers of soil, कितने लेयर होते हैं soil के, मिट्टी के. composition of soil, मिट्टी में कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं या मिलकर बनी होती हैं. formation of soil, soil मिट्टी का निर्माण कैसे होता है. और uses of soil, मिट्टी का उपयोग. At first, we will discuss about the definition of soil. What is soil? मिट्टी क्या है? A mixture of tiny particles of rocks, dead plants and animals, and different types of microorganisms are included in this. It means soil उसे कहेंगे जिसमें मृत जीव, मरे हुए जीव, पौधे, साथ ही साथ उसमें टीनी पार्टिकल्स, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स का जो जब वो टूटते हैं तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो छोटे पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन भी सॉइल में इंक्लूड होता है. तो इससे हम कहेंगे कि सॉइल है मिक्सचर ऑफ dead plants and animals, tiny particles, and also including some microorganism is known as the soil. Children, जिस तरह से हम मैथ्स में कैलकुलेशन पढ़ते हैं, साइंस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में समझते हैं, उसी तरह से सॉइल के लिए एक स्पेशल ब्रांच रखा गया है. द स्पेशल ब्रांच ऑफ सॉइल फॉर टीचिंग, एंड दैट ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट सॉइल एंड देयर टाइप्स, देयर फॉर्मेशन, कंपोजिशन ऑफ सॉइल. दिस ब्रांच ऑफ साइंस इज कॉल्ड पैडोलॉजी. व्हाट? पैडोलॉजी. It means pedology, a branch of science in which we study about soil, are called soil science. It means pedology. A common word, the soil science, it is common or similar words, pedology. Now we will discuss about their types. Mainly, there are 4 types of soil, but according to your class, you will learn only sandy soil, clay soil, and loamy soil. Soils are classified into 3 groups: sandy soil, clay soil, and loamy soil. What is sandy soil? Sandy soils, that soil in which the amount of sands are present, are called sandy soil. The amount of sand are present, this type of soil are called sandy soil. It does not hold water. It has no more capacity to absorb water because they are made from the particles of sand. So it does not hold water. They are found in the, especially we can say, the desert. So this type of soil not useful for growing plants. Clay soil, it can hold water and it has capacity to more retention of water. So
It is very useful for crops, and also we use some other materials. We made some other materials like toys and different types of pots made from clay soil. Loamy soil. Loamy soils are mixture of this both soil, clay soil and sandy soil. That soil in which sand, the particles of sand and the amount of clay both are including. This type of sand, this type of soil are called loamy soil. It means loamy soil उसे कहेंगे जिसमें सैंडी soil और क्ले soil दोनों का मिक्सचर होता है. इसके पास कैपेसिटी होती है एब्जॉर्ब करने की लॉट ऑफ वाटर को. दे एब्जॉर्ब, दे हैव मोर कैपेसिटी टू रिटेंशन ऑफ वाटर, एंड दे हैव in this soil humus are also including. Humus provide the fertility power to the soil. Humus provide the fertility power of the soil, in which dead plants and animals are including in that soil is known as the humus. Now we will discuss about layer of soil. Layer of soil. According to your classes, we will discuss about the layer of soil. Layer of soil, सतह, मिट्टी का सतह कौन कौन सा होता है? There are 5 layers of the soil. At first, O horizon, A horizon, B horizon, C horizon and R horizon. Okay? At first, we will discuss about O horizon. What is O horizon? O horizon are called organic layer of the soil. They are called organic layer of the soil because in this layer the leaves and twigs are remains. This is the first layer. The upper layer of the soil are called O horizon, organic layer. Next, A horizon, which is called top soil. A horizon are known as top soil, and plants grow and live here, in which that soil, that horizon in which plant and animal live, grow, this type of soil are known as the A horizon. It means top soil. Okay. Now we will discuss about B horizon, which are called subsoil. After top soil, the beneath layer of the underneath layer of the A horizon are called B horizon. B horizon are called subsoil. They are made from clay, iron and organic things. B horizon. C horizon are called parent soil. Parent soil, because the upper layer of the soil, such as O horizon, A horizon, B horizon, are made from this horizon. They help to maintain the upper layer of the particles, upper layer of the soil. They are made of large rock, because parent soil are called C horizon, because C horizon helps to the formation of O, A and B horizon. It means C horizon को हम parent soil कहते हैं. इसलिए कहा जाता है parent soil इसे, क्योंकि ये सब B, A और O से नीचे के लेयर में पाए जाते हैं और ये काफ़ी बड़े होते हैं.
और इन्हीं लेयर से हम इन सारे लेयर को प्राप्त करते हैं, ऑब्टेंड करते हैं. सो वी से sea horizon are also known as the parent swell. Now we will discuss about R horizon. R horizon are found in the last layer of the swell. They are the bottom of the layer. It means R horizon are found in the at last of the swell. It means R horizon को हम बेडरोक कहते हैं क्योंकि ये सबसे अंत में पाए जाते हैं R horizon. और R horizon बहुत बड़े बड़े पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, बिग पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं और सॉलिड पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं. और द पोजिशन ऑफ R horizon आर बॉटम ऑफ द swell. They are the last layer of the swell. ये सबसे अंतिम लेयर है किसका? swell का. Now we will discuss about composition of swell. Composition of swell. What is the meaning of composition? Composition of swell. swell में कौन कौन सी चीजें मिली हुई हैं? swell कैसे बनते हैं? swell composed of dead plants of animals, plants, microorganism and some smallest particles, teeny particles. It means swell composed of teeny particles, dead plants and animals, remain leaves and also microorganism. Now we will discuss about formation of swell. मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? मिट्टी का निर्माण कोई 1-2 दिन की बात नहीं है. swell के निर्माण 1-2 दिन में नहीं होते हैं बल्कि करोड़ों मिलियन वर्ष लग जाते हैं. It means the formation of swell after the million thousands of years. They are made from some natural action such as through wind. हवा के द्वारा भी मिट्टी का निर्माण होता है. Through sun, through water. अब हवा विंड के थ्रू कैसे swell के फॉर्मेशन होते हैं, कैसे swell फॉर्म्ड होता है? Wind, if a very high force of the wind, then a big particles transfer from one place to another place. So if a big particles transfer, इट मीन्स यदि बड़े पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं किसके थ्रू? विंड्स के थ्रू, इसके फोर्स के कारण, तो उनमें फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है और इस तरह वो धीरे धीरे बिग पार्टिकल से छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. एंड आफ्टर दिस टीनी पार्टिकल्स कन्वर्ट इनटू द swell. Sun also helps to formation of the swell due to their temperature, due to their heat. When the heat of the sun falls down on the rocks, then they contract and expand. वो सिकुड़ते हैं और फैलते हैं. इस तरह से continue the process of contraction and expansion, they break, and after the breaking of the big particles they convert to the swell. And also water helps to the formation of swell like wind. Uses of swell.
यूज क्या है, किस तरह का यूज होते हैं सॉइल में, सॉइल का यूज कहाँ कहाँ होता है। द यूजेज ऑफ सॉइल फॉर एग्रीकल्चर, ग्रोइंग प्लांट्स, फ्लावर, फ्रूट्स एंड pots, toys are made from the soil, and also we can say that metals, irons, some metals are also made from the soil. Okay children, so thus our chapter is going to be end. Thank you.